Hello students, this is Seema and today I am going to teach you class 12th Flamenco book third poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Pablo Neruda born at 1904 and died in 1973. His pen name was Naphtali Relcado Raz Bocelito, who was born in town of Parral in Chile. Neruda's poem was full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोएम में जो पोएट खुद को शांत रखने के लिए कहता है, एक सेकेंड के लिए वो पूरी तरह शांत हो जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है. सो बिफोर वी लर्न दिस पोएम we have to think about the poem. So let's read the poem and I'm going to give you word meanings and poetic devices given in the poem with full explanation. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So poet यहाँ कहते हैं कि let us count 12 now and we will be silent and motionless. For at least once we should not speak in any language on the surface of this earth. And let us stop for a second and don't move even our arms so much. हम जब तक 12 गिनती नहीं कर लेते, 12 तक गिनती करने तक हम बिल्कुल शांत हो जाएं और किसी भी भाषा में बात न करें और एक सेकंड के लिए वहीं रुक जाएं जहां हम हैं और अपने हाथों को भी बिल्कुल ना हिलाएं. It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden stillness. So, it would be an exotic moment. Exotic means unusual or intensing. बिल्कुल विलक्षण और मोहक. Moment means a short period of time. Why? Without rush, without engine. Without rush means hurry. बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना हो, हड़बड़ी ना हो एंड और मशीनों की तरह तेज ना हो कोई काम. इट वुड बी ऑल टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंथनेस. स्ट्रेंथनेस मीन्स अनयूजुअल, सरप्राइजिंग, आश्चर्य से भरपूर. तो पोएट कहते हैं कि ये जो क्षण है it will be an intrinsic and attractive moment. It should be an exotic moment and there will be no hurry, there will be no sound of machine. It will be sudden, unfamiliar and unusual moment that we will enjoy together. यह एक ऐसा क्षण होना चाहिए जब हम सभी मिलकर के इस क्षण का आनंद लें और यह बिल्कुल अनोखा हो. इसमें कोई हड़बड़ाहट ना हो, कोई मशीनों की रेल पेल ना हो और कोई शोर शराबा ना हो. Now let's see the next stanza. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So fishermen in the cold sea. Cold sea means the sea near the poles, ध्रुवों के समीप का समुद्र. And the fishermen in the cold sea would not harm whales. जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो fishermen हैं, even the fishermen, those who are catching fish in the far from of cold seas, will not harm the whales in the sea. The man who is gathering salt will look at his hurt hands and will take care of them. So the fisherman who was gathering fishes and gathering salts would look at their hurt's hand and will stop doing all these things. जो लोग समुद्र से मछलियों को पकड़ते हैं, जो नमक इकट्ठा करते हैं, वे सभी अपने घायल हाथों को देखेंगे और उसका उपचार करेंगे और आगे कोई काम नहीं करेंगे. Those who prepare green wards with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. So, the person, those who are preparing for green wars against the environment, जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं. The wars with gas, यूज़ ऑफ पॉइजनस गैसेस इन वार्स, जो लोग वार में पॉइजनस गैसेस को यूज़ करते हैं. वार विथ फायर, और जो
use of fire in the arms and napalms bombs and cows fire जो अग्नि शस्त्र को इस्तेमाल करते हैं, and then victory with no survivor जिनका conquest जिनकी victory those who are left alive जो इस युद्ध में सरवाइव कर जाते हैं, विक्ट्री को पा जाते हैं, जीत जाते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जो बाद में लड़ाई की युद्ध के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने अपने कलीग्स के साथ अपने ब्रदर्स के साथ में उस विक्ट्री को एंजॉय करते हैं इन द शेड डूइंग नथिंग. और द पोएट गिव्स द पीस ऑफ एडवाइस टू द persons, to the warmongers. They wages war against the environment, and this they use the poisonous gases in the war. They use firearms. All they must stop the business of killing. If they kill everyone, no one will survive to see their victory. अगर वो सिर्फ युद्ध करते रहेंगे तो कोई भी उनकी विजय को देखने के लिए सरवाइव नहीं करेगा, कोई नहीं बचेगा. दे मस्ट डाइवर्ट देयर माइंड एंड पुट ऑन गुड क्लीन क्लॉथ्स. दे शुड सीज ऑल हार्मफुल एक्शंस. दे शुड गो आउट फॉर वॉक विद देयर ब्रदर्स अंडर शेडी ट्रीज. और उन्हें कभी ऐसा चाहता है कि वे सभी स्वच्छ कपड़े पहने और अपने दूसरे भाइयों के साथ में वृक्षों की ठंडी छांव में वे सैर करें, इन द शेड डूइंग नथिंग, और कोई लड़ाई झगड़ा ना करें. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ वो बहुत confusing नहीं है, वो किसी को confuse नहीं करता है. That is not misunderstood. उसको आप गलत ना समझें. That should not be confused. Inactivity means doing nothing, idleness, कुछ न करना. तो पोएट कहते हैं कोई इसे गलत ना समझें. मैं यहाँ अकर्मण्यता के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ ना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. And life is what it is about. I want no truck with that. Truck with that means associate with. मैं यहाँ पर किसी चीज़ का मृत्यु से कोई संबंध नहीं बता रहा हूँ. एंड ही सेड दैट अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस. अगर कोई कुछ भी नहीं करता है और सभी लोग एकदम साइलेंट रहते हैं तो क्या होगा? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ. हम अपने आप को कभी नहीं समझेंगे और एक डर पैदा होगा हम सबके अंदर, मौत का डर. So poet is saying in this stanza that when he is advising for silence, he is saying that should not be confused with total inactivity. And doing nothing doesn't lead to total inactivity. Total inactivity means death, and which is no association. And there is no association with death. We should not focus on only one thing, keeping our lives moving. We should learn to give us rest. For once, doing nothing can be good for us when we are threatening ourselves with death. So then a long silence can do us good. So keeping quiet, that not means to be inactive or to be like a death, but we should keep silence and focus on our strength and focus on our life. सो लास्ट स्टिंजा में पोइट बताते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. सो लास्ट स्टिंजा में पोइट कहते हैं दैट लेटर मीन्स जो बाद में आने वाली, प्रूव्स टू बी अलाइव जो जीवित रहते हो. व्हेन मैनकाइंड कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम अर्थ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. Mankind can learn from a lesson from earth. Life and living never stop on earth. When everything appears to be dead, only one thing remains alive, and it is the earth itself. Now the poet will count up to 12 and all other will keep quiet during this period, and then he will go out from there. So he refused to associate or deal with, to refuse to tolerate something, but to have
to keep silence for a moment till he count 12. So children, that's all about the poem, and now let's see the poetic devices given in the poem. So students, let's learn the poetic devices given in this poem. So here in first stanza we have anaphora. Anaphora is the poetic device when two consecutive lines begin with the same word. So here in first, second stanza, this second and third line begin with the same word, let's not. Let's words. So second and third line start with this same word. So it is the poetic device anaphora. And another poetic device is repetition in second stanza. Here the word without is repeated, without rush, without engines. So here we have poetic device is repetition. In third stanza we have poetic device alliteration. In last line we have this sound, E sound is repeated, H sound is repeated in last line, her. Okay, in these three words H sound, her sound is repeated. So this is called alliteration, when the same sound, same consonant sound repeated in one line, that is called alliteration. Once again we can find the poetic device repetition here, wars with gas, wars with fire. And one more poetic device given here, that is enjambment. Enjambment is in next stanza. There is no punctuation marks in the line, in two lines, that would put on clean clothes and walk about their brothers in the shed doing nothing. So in these lines we have enjambment, poetic device. Enjambment is a poetic device without any punctuation marks. Okay, and in last stanza we have the poetic device personification. Here in last stanza, earth is personified with the human being. Perhaps the earth can teach us. Earth is personified like a teacher, and in this line it is called that it is a teacher. So earth को यहाँ पर human being की उपमा दी गई है, teacher की उपमा दी गई, that is why it is called the poetic device personification. So children, with this we come to an end of the video. I think it is useful for you. If you have any query or question, you can ask in comment section. Thanks for watching.